पाकिस्तान ने क्या किया, पढ़ लेते हैं। Pakistan officially, the Islamic Republic of Pakistan gained independence on 14th August 1947. In 1971, a civil war in East Pakistan resulted in the independence of Bangladesh. Pakistan's history has been characterized by periods of economic growth, military rule, and political instability. Geographically, Pakistan is located in South Asia, borders Central Asia and Middle East, West Asia. Its borders are with China in the north, towards west and northwest are Iran and Afghanistan, towards east and southeast, its borders are with India. The country has an area of 7,96,000 square kilometers. China का कितना था? 9.6 million square kilometers. इनका 7,96,000 square, तो 0.7 million. The total cultivated area is 2,21,300 square kilometers, whereas the area under forest is 42,300 square kilometers. Just read once. Population and language. Pakistan is the sixth most populous country as per 2015 estimates. As per 2015 estimates, with a growth rate यही याद करना पड़ेगा आपको. अभी तो minor change है. As on date, पाकिस्तान का 1.9 है, चाइना का 0.46 है, इंडिया का 0.8 है. बट ये ग्रोथ रेट आपको बुक वाले याद करने हैं. ग्रोथ रेट बुक वाले. Which is the most populous country, जो लेटेस्ट डेटा है, प्लीज. ठीक है ना? So China, as per 2015 estimate, sixth most populous country, growth rate of population 2.1% per annum. 1/3 of total population lives below the official poverty line. It has the second largest Muslim population after Indonesia. This is important. Second largest Muslim population after Indonesia. The national language is Urdu and English is the official language. Economy, mixed economic system. Pakistan follows the mixed economy. China, socialist economy. China, everything was controlled by the government. Uस point of view से socialist economy. Pakistan, mixed economy with the coexistence of public and private sectors. Introduction of various policies. In the late 1950s and 60s, Pakistan introduced a variety of regulated policy framework for growth of domestic industries. The policy combined tariff protection for manufacturing of consumer goods, together with direct import controls on competing imports. That is, Pakistan also introduced import substitution policy like India. बड़े सारे सिमिलैरिटीज मिलेंगे आपको स्कीम्स में, और ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया ने पहले अडॉप्ट करी हो. ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया ने अडॉप्ट करी और पाकिस्तान ने कॉपी कर ली. ऐसा जरूरी नहीं है, बट सिमिलैरिटीज हैं. तो टैरिफ प्रोटेक्शन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इन ऑर्डर पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. तो इनिशियली फोकस किस पे था? प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, प्रमोशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर. फिर धीरे धीरे रियलाइजेशन हुई कि तो नुकसान हो रहा है, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर प्रमोट करा प्राइवेट सेक्टर, हटा दी रिस्ट्रिक्शंस, प्रमोट करा कंपटीशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पॉलिसीज, ग्रीन रेवोल्यूशन. नाम तो सुना ही होगा, पाकिस्तान की बात चल रही है. In case of agriculture, introduction of green revolution and increase in public investment in infrastructure led to a rise in production of food grains. This changed the agrarian structure dramatically. सुनने पे ध्यान देंगे. Importance to the role of public sector in the early 1970s. Importance to the private sector in the late 1970s. कितनी जल्दी realize हो गया कि कुछ गलत हो रहा है. इंडिया में भी यही हुआ था. इनिशियली मेजर रोल वाज गिवन टू द पब्लिक सेक्टर, later on to the private sector. In the late 1970s, there was a shift in the government policy when it adopted the policy of denationalization. Government encouraged the private sector and offered various incentives to them. All this created a conducive climate for new investments. Financial support during the late
1970s. During this period, Pakistan also received financial support from Western nations. US इनको हमेशा से ही support करता रहा है. Or remittances was also a major source of foreign exchange for Pakistan. Remittances from abroad. नेशनल इनकम में सुना है हमने रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड. तो रेमिटेंसेस होते हैं लोन्स एंड बोरोइंग्स नहीं. पाकिस्तानी दूसरी कंट्रीज में जाके स्पेशली मिडिल ईस्ट में जाके काम कर रहे हैं, वहां से पैसा भेज रहे हैं अपने घर, गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे, वैसे ही पैसे भेज रहे हैं अपने घर कि वो काम दूसरी कंट्रीज में जाके, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, वहां पे काम कर रहे हैं और रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड आ रही है. तो पाकिस्तान के लिए तो सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है ना. यस और नो? Remittances from immigrants to the Middle East. This helped the country in stimulating economic growth. Pakistan got this aid mainly for strategic interest of the Western and Arabic countries during the Cold War period. Reforms. Pakistan adopted economic stabilization and structural reform policies in 1988. So when were the reforms introduced in China? 1958 में आया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन. फिर ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 1965. Reforms were introduced in 1978. ओपन डोर पॉलिसी. पाकिस्तान में रिफॉर्म्स कब आई? 1988. इंडिया में कब आई थी? ट्रिक क्वेश्चन. 2014 with the Modi government. तो 2023. So Pakistan 1988, in an effort to reduce domestic financial imbalances and external deficits. However, there have been problems with the implementation of these policies in terms of consistency and sequencing, which still has consequences in the Pakistan economy today. So reforms were introduced in 1980. अभी इतना पढ़ लें पहले. Too much information.